हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो थोड़ा अलग है हमारे हर वीडियो की तरह। टुडे वी गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट हाउ नेटफ्लिक्स सजेस्ट यू कंटेंट टू कंज्यूम, कंटेंट टू वॉच based on your personal preferences. Stay tuned, watch till the end. You might actually learn something today, or maybe not, but watch it just in case. So yeah, starting off with the video. So Netflix close to 200 million plus, nahi, 200 plus million, shit. Okay, so Netflix has 200 plus million subscribers, overall watching pool of close to 400 million. 400 मिलियन लोग को पर्सनलाइज रिकमेंडेशन देता है नेटफ्लिक्स। वो करता कैसे? नाउ द शॉर्ट आंसर इज मशीन लर्निंग। हो गया, बट यू आर नॉट हियर फॉर द शॉर्ट आंसर, आर यू? तो लंबे आंसर की बात करते हैं अभी। तो नेटफ्लिक्स कौन सा डेटा पॉइंट आपके बारे में एनालाइज करके आपको रिकमेंडेशन देता है? स्टार्टिंग ऑफ विथ व्यूअर हिस्ट्री, जैसे कि आप कौन सा टाइप की मूवी देख रहे हो, द जॉनर, द रिलीज डेट, आपका इंटरैक्शन, आपके रेटिंग्स, और उसके अलावा द ड्यूरेशन यू वॉच अ टाइटल, आपका कंट्री, डे ऑफ द वीक एंड इवन टाइम ऑफ डे। ऑब्वियसली आप नॉटी चीजें रात में देखोगे। In fact, it even analyzes the device you watch on. I mean, extending that naughty वाला example, आप मोबाइल पे देखोगे ना कि फैमिली के टीवी पे। So yes, all of this is analyzed by Netflix before it starts suggesting you the movies that you'd like to see. But नहीं। So why does Netflix need so much of your data? Because personalization is hard. It's not easy for Netflix to suggest, क्योंकि ये एक डाइवर्स चीज़ होती है, ये चेंज होते रहती है टाइम से। आपको सडनली किसी ने एनीमे दिखा दिया तो आप एनीमे बिंज वॉच करने लग गए। सो दैट चेंजेस योर recommendations as well. Also, it's not just about the accuracy of the recommendation. ये diverse भी होना चाहिए, fresh भी होना चाहिए, fair भी होना चाहिए. So this whole algo that Netflix uses is not very straightforward. It's not very easy to explain as well. It involves a lot of things. We're just going to scratch the surface a little bit. We're going to talk about how they personalize your thumbnail for the movies you watch on Netflix. इसके बारे में बात करते हैं. So how does Netflix personalize your artwork for the movies you like or probably would like based on that artwork? So the easy way to do it would be 10 टाइप के अलग इमेज ले लो, 10 अलग या 50 अलग या 100 अलग यूजर्स को दिखा दो. Now based on the hit rate between all that user group, you start ranking and बस ये है अच्छा वाला आर्टवर्क ये मूवी के लिए. But that's not how they do it. Now the real deal, the real way to do it would be आपके टेस्ट के हिसाब से वो थंबनेल भी पर्सनलाइज होता है. एंड दिस एक्टिवली हैपेंस ऑन नेटफ्लिक्स. नाउ हाउ डज दिस हैपन? फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे लेट्स टॉक अबाउट द मूवी गुड विल हंटिंग. नाउ गुड विल हंटिंग ऐसे यूजर के लिए जो रोमांटिक मूवीज ज़्यादा देखता है, उसका ऐसे टाइप का थंबनेल आएगा जिसमें थोड़ा कूची कूइंग टाइप चीज़ हो रहा है, तो शायद ओ दिस इज अ रोमांटिक मूवी, शायद अच्छा रहेगा, वो देख लेगा. या ऐसे टाइप के यूजर के लिए जो कॉमेडी मूवी ज़्यादा देखता है, उसके लिए मे बी रॉबिन विलियम्स जैसा थंबनेल आएगा, बिकॉज रॉबिन विलियम्स इज नोन फॉर कॉमेडी. ऐसा एक एग्जाम्पल हो गया. Now another example to look at would be, suppose you're a fan of Uma Thurman and Pulp Fiction का जो आपको thumbnail आएगा, that will prominently show Uma Thurman and make sure that you watch it. Now that's another way to think about it कि आप किसी एक्टर या एक्ट्रेस के फैन हो तो उस हिसाब से आपका thumbnail चेंज होता है. Similarly आप जॉन ट्रावोल्टा हुए तो आपका thumbnail again चेंज हो गया. Now these examples are very simple, very straightforward. Not all scenarios are that simple because you cannot broadly classify and broadly make rules फॉर यू नो स्टफ लाइक दिस. तो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स एनालाइज होते हैं, बहुत सारे रियल टाइम में होता है, उस हिसाब से आपके रिकमेंडेशन चेंज होते हैं. प्रोबब्ली एवरी यूजर ऑन योर प्रोफाइल गेट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ रिकमेंडेशंस. ऑल ऑफ दैट इज थैंक्स टू मशीन लर्निंग. सो और कौन से तरीके हैं जिससे नेटफ्लिक्स मशीन लर्निंग यूज़ करता है? सो दे यूज इट फॉर इवन डिकोडिंग एंड एनकोडिंग, बेसिकली अडेप्टिव बिट रेट बेस्ड ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन. Also, they use it for deciding what to spend on, what kind of movies to produce. Now, which kind of movies to advertise to get another subscriber. Now, ये सब data भी उनके current viewing data से लेके machine learning का algo लगा के they actually find out. So, to conclude, machine learning and AI is actually changing the way we live our lives. Our mobiles have them, our PCs have them, even DLSS is actually machine learning based. A lot of FSR is also machine learning based. So it's all around us, basically. Hope you learned something new from this video today. We enjoy talking about these topics as much as we enjoy building builds for machine learning. Now that was smooth, maybe not, but it was a plugin nonetheless. So we make all kinds of builds, machine learning वाले हो गए, gaming वाले हो गए, और बहुत सारे और भी. So if you have any requirement, if you need to talk to somebody, get in touch with us on our socials.
not the comment section on YouTube for sure, on our email address. Yeah, and yeah, discuss your stuff with us. Like, share, and subscribe. Leave a comment down below on what you'd like to watch next. Cheers. Sit quietly, don't make noise. I know why he took us. Sit quietly, don't make noise. अब नहीं होता 10 मिनट, अब नहीं होने वाला है 10 मिनट में. Sit down quietly. Awesome. इन्हों लेके जाओ बाप. बाहर जाओ दोनों भी. हो गया. Zuhair, bro, don't make noise. That's how it's done. Just shut up, please, guys. Please, I need to go home. If we need to go home, I need to finish this. बेचारा